Hello dear students, today I am here with another topic, that is Downer syndrome. Downer syndrome is also known as trisomy 21st or trisomy G or Mongolism. Downer syndrome, this is also known as trisomy 21st or trisomy G or Mongolism. We will see why this is known as trisomy 21st, trisomy G or Mongolism. Now, what is Downer syndrome or what is trisomy 21st or what is trisomy G? Downer syndrome or trisomy 21st, this is a genetic disorder caused when abnormal cell division occurs. It is a genetic disorder. Caused when abnormal cell division occurs, results in extra genetic material. ट्राइसोमी 21st होता क्या है, डाउनर सिंड्रोम होता क्या है? डाउनर सिंड्रोम यूजुअली ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है। किसकी वजह से होती है? व्हेन देयर ऑकर्स एबनॉर्मल सेल डिवीजन, जब एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है, दिस रिजल्ट्स इन एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल दैट इज फ्रॉम क्रोमोसोम 21st, दैट इज फ्रॉम क्रोमोसोम 21st. दिस इज द डाउनर सिंड्रोम. डाउनर सिंड्रोम जो है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. किसकी वजह से होता है? एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर आता है विद इन द सेल, दैट इज नोन एज डाउनर सिंड्रोम. नाउ अब हम देखते हैं ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जो है, किसकी वजह से होता है. व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डाउनर सिंड्रोम? Firstly, as you know, this is a genetic disorder, so it usually is caused by an error in cell division. Error occurs in cell division. That is called as non-disjunction. So, which causes Downer syndrome? Non-disjunction causes Downer syndrome. Non-disjunction होता क्या है? When there occurs error in the cell division. Usually जो ये non-disjunction है, किसकी वजह से होता है? This results in an embryo. It results in embryo with three copies of chromosomes. नॉन डिस्जंक्शन जो है किसकी वजह से होता है? इट रिजल्ट्स इन एन एम्ब्रियो में होता है विथ 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 21st इंस्टेड ऑफ यूजुअल 2 copies. As you know, in humans there are 46 chromosomes, but in this disorder, Downer syndrome, there is an individual is having 47 chromosomes instead of 46 chromosomes. Individual is having 47 chromosomes instead of 46 chromosomes. This is the normal. Normal में होते 46 chromosomes, but instead of 46, the individual is having in Downer syndrome, the individual is having 47 chromosomes. ये जो ये extra chromosome है, this results in the embryo during the intrauterine life में
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एबनॉर्मलिटीज आती है जिसकी वजह से देयर ऑकर्स 3 कॉपीज. नॉर्मल में यूजुअल में होती है 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स, बट in this defect there are 3 copies of chromosome of 21st. That is why this is also known as trisomy 21st. This is the main cause that is responsible for Down syndrome. Genetic disorder hai. Also there are some predisposing factors that are responsible for Down syndrome. There are some predisposing factors that are also responsible for Down syndrome, that is heredity, consanguineous marriage, environmental factors, maternal infections, that may be rubella or some other infection, and intrauterine infections. These are some predisposing factors that are responsible for Down syndrome. That is heredity, consanguineous marriages, environmental factors, maternal infections, or when mother is taking alcohol or smoking some other, that also leads to Down syndrome, that leads to chromosomal abnormality, or intrauterine infections. These are also some predisposing factors responsible for Down syndrome. Now you will see what are the types of Down syndrome. There are 3 types of Down syndrome. Types of Down syndrome. There are usually 3 types of Down syndrome. That is, first one is the trisomy 21st. Second one is translocation, and third one is the mosaicism. These are the 3 types of Down syndrome. Down syndrome में 3 types होते हैं. First one is the trisomy 21st, second one is the translocation, and third one is the mosaicism. Now you will see the first one, that is the trisomy 21st. Trisomy 21st जो है, this is the most common type of Down syndrome. Most common type. This accounts for about 95% of cases. Trisomy 21st is the most common type, and this accounts for about 95% of cases. In trisomy 21st, there are 3 rather than 2 number of chromosomal copies. In trisomy 21st, इसमें होता क्या है? There are 3 rather than 2 number 21st chromosomes in every cell of body. That means कि
इसमें होता है there are usually 46 chromosomes, but a person with this type of Down syndrome, that is trisomy 21st, that means it is having 47 chromosomes instead of 46 chromosomes. And ये कहाँ पे होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम? दैट ऑकर्स इन द क्रोमोसोम नंबर 21st, सो द नेम ट्राइसोमी 21st. ट्राइसोमी 21st मोस्ट कॉमन है, अबाउट 95% ऑफ केसेस में प्रेजेंट होता है. ट्राइसोमी 21st में 47 क्रोमोसोम्स होते हैं इंस्टेड ऑफ 46 क्रोमोसोम्स. लेकिन ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है कहाँ पे आता है? दिस ऑकर्स इन द क्रोमोसोम नंबर 21st, सो द नेम ट्राइसोमी 21st. Another one is the second one is the translocation. Translocation, this accounts for about 4% of cases. In translocation, part of chromosome 21st breaks off during cell division and attaches to another chromosome, typically chromosome number 14. ट्रांसलोकेशन में होता क्या है? यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर 21st है वो ब्रेक हो जाता है और वो अटैच हो जाता है अनदर क्रोमोसोम नंबर पे. किस क्रोमोसोम नंबर पे? क्रोमोसोम नंबर 14 पे. दैट मीन्स कि यहाँ पे ट्रांसलोकेशन होती है, पोजीशन चेंज हो जाती है. दिस इज नोन एज द ट्रांसलोकेशन. While the number of chromosomes in the cell remains 46, the presence of an extra part of chromosome 21st causes the characteristic of Down syndrome. This is translocation. Third one is the mosaicism. Mosaicism, the third type है. This occurs when non-disjunction of chromosome 21st takes place. Non-disjunction chromosome 21st takes place in one, but not in all. मोजेसिज्म जो थर्ड टाइप है डाउन सिंड्रोम में, इसमें क्या होता है? देयर ऑकर्स नॉन डिसजंक्शन. व्हेन नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम 21st टेक्स प्लेस इन वन, ये एक ही में होता है बट नॉट इन ऑल. दैट मीन्स कि इसमें क्या होता है? व्हेन दिस ऑकर्स देयर इज अ मिक्सचर ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स. देयर इज मिक्सचर ऑफ, मोजेसिज्म में मिक्सचर ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स होता है. Some cells that contain usual 46 chromosomes and others contain 47 chromosomes. This is rare type. This is accounts for about 1% of all cases of Down syndrome. Remember, जो मोजेसिज्म है इसमें क्या होता है? नॉन डिसजंक्शन होता है, क्रोमोसोम 21st टेक्स प्लेस इन वन. इन वन दैट मीन्स कि मिक्सचर ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स होता है. कुछ सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और कुछ सेल्स में 47 क्रोमोसोम्स होते हैं. इसीलिए हम कहते हैं बट नॉट ऑल, क्योंकि हर एक में नहीं होता है. कुछ सेल्स इसमें नॉर्मल होते हैं, दैट इज हैविंग 46 क्रोमोसोम्स, और कुछ में होता है 47 क्रोमोसोम्स. These are the three types of Down syndrome, that is trisomy 21st, translocation and mosaicism. Thank you.